नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनलाइजेशन के बारे में, है ना। कई सारे बच्चों को इसमें चैलेंज आता है कि रेशनलाइज करना कैसे है, किस फैक्टर से रेशनलाइज करना है, और रेशनलाइज करने के बाद आइडेंटिटीज कौन सी लगानी है, और कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, है ना। तो आज हम इन्हीं सारे प्रोस्पेक्टिव्स पे बात करेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, कैसे करना है, और कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आपको जनरेट हो सकते हैं। ठीक है। हम वन बाय वन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस डील करेंगे। हमारा जो डिस्कशन होगा वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल वाले क्वेश्चन से लेकर धीमे धीमे करके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन लेवल को अपग्रेड करेंगे, और जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी या डिफिकल्टी या हॉट्स कैटेगरी क्वेश्चंस बन सकते हैं वहां तक अपन इस टॉपिक को लेकर जाएंगे। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका स्कूल एग्जाम के लिए या किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली तैयार हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेशनलाइजेशन होता क्या है और इसको परफॉर्म करने का मीनिंग क्या है, क्यों इसे हमें परफॉर्म करना है, पहले वो चेक करते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन, ओके। द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, एक जाना पहचाना सा वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, रेशनल। ओके। सो वी नो अबाउट दिस, रेशनल, है ना। तो यहाँ पे इस वर्ड का मतलब डिनोमिनेटर के कंटेक्स्ट में है कि जो भी हमें टर्म या एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसका जो डिनोमिनेटर है वो हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है, उसे रेशनल बनाना है। रेशनलाइज करने का मतलब उसको रेशनल बनाना है। ठीक है। लेट्स सी हाउ इट कैन बी डन। अब रेशनल बनाना इन द सेंस कि वो पहले इरेशनल होगा तो आप उसको रेशनल में कन्वर्ट करोगे, है ना। और एक जनरल रूल ये है कि जब भी आपको किसी इरेशनल नंबर को रेशनल में बदलना हो तो उसका एक पॉसिबिलिटी ये होता है कि मल्टीप्लाइड विद द सेम नंबर एंड यू गेट द रेशनल पार्ट ऑफ इट, राइट। तो दिस इज और वी आर गोइंग टू फॉलो हियर ऑल्सो। ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल का एक मैं आपको, अपन स्टार्ट करते हैं रेशनलाइजेशन की सबसे पहली कैटेगरी, लेवल वन जिसको बोल सकते हैं स्टार्टिंग लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो कुछ इस तरीके से आएगा, दे विल आस्क अस टू रेशनलाइज फॉर एग्जांपल 1/√7। okay, now you can see here the denominator is irrational, okay, because its square root cannot be finded out, so it's irrational number, है ना। now अब हमारे पास अ, उस नंबर को हमें रेशनल में चेंज करना है। तो व्हाट वी विल डू इज कि वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइमल्टेनियसली सो दैट इट डज नॉट चेंज द क्वेश्चन। तो मैंने व्हाट आई डिड इज कि √7 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और √7 से हमने डिवाइड भी कर दिया, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द क्वेश्चन। नाउ if I go with numerator into numerator, I get a √7, and √7 into √7 gives us 7. Now, I'm done with rationalization. That's it. Here, the denominator, as we talked about, the denominator has been converted to a rational form. Okay. So that is why it is called as the process of rationalization. Okay. So it was a single number, है ना। Let's see what next varieties could develop under this section. For example, if you have a number like √40/√3 and I need to rationalize this. Okay. While rationalizing, we are not concerned with the numerator. Okay. We have to only perform according to the denominator. Right. So here, since the denominator is √3, I'll do the same task, multiplying and dividing by √3. Okay. Let's see. √40 into √3, that will give us √120. Okay, that could be further simplified. And √3 into √3 will give us a 3. Okay, 120 can be simplified further. For that, you can do the prime factorization and take out the factors. Okay, let's see. For this will give us 60, then it will give us a 30, then this will give us 15, then we have a 5, 3 and a 5. Okay. So here the pair formed out is only for a 2, the way of taking square root. So we only get a pair of 2, 5 to the 15, 15 to the 30 will remain inside. So that will give us 2 √30. That is an additional step to simplify further. And that would be our answer.
Okay, so this is the another type for rationalization. These are the denominator is single digit right now. We are moving on to the next level then after this. Okay, so let's check out the next part. So next category of question. For example, if we have 3 plus root 2 divided by 4 root 2. Okay, so we have got a new variety where we have multiple terms involved. Let's check out. So as I said, we are not concerned with the numerator. And we have to deal according to the denominator. Here our denominator is 4 root 2. Okay. Now, since the 4 is already a rational part, we need not to take it again on the multiplication division side. Okay. So we'll go with only the irrational part, root 2 and root 2. Okay. Now, let's see what next. In the numerator, you need to follow the distributive property of multiplying root 2 into 3 and root 2 into root 2. Okay. So root 2 into 3 are two unlike terms. They will directly give us a 3 root 2 plus root 2 into root 2 becomes 2. So that's the numerator. And in denominator, let's check out carefully. This root 2 into root 2 will give us a 2, and that 2 to be further multiplied with 4. So in total, we got a 8 as the denominator. And that's our final answer because nothing can be taken out common now. Okay. So that's one form. Actually, let's move to the next type. So we've got two terms in the numerator here in this variety. Now let's take two terms in the denominator now and how it goes. So let's take the next variety, that is say 16 upon root 41 minus 5. Okay, let's check out this. Okay, now here for the first time, we have got two terms in the denominator. Okay, right now we were having only single term, so we simply multiplied that particular term only. Here we got two terms. Now, when you have two terms, a binomial we can say, then follow it very carefully. You have to use the same terms, okay, whatever is there in the denominator, पर हम उसका साइन चेंज करेंगे. रूट 41 plus 5, root 41 plus 5. Okay, we have to change the sign. We have to change the sign and multiply, divide the same terms. Okay. Now, what next? Numerator will go again with a distributive property, 16 into root 41. We'll check out the denominator first and then we'll go for the multiplication later. Let's see. It is possible that that 16 would be cancelled out with the denominator directly. So we'll keep it on hold right now. Now, in the denominator, from now in all the questions that will come up after this, we'll have a single identity to be used in all the questions. That is, if we have, I'll write it here. If we have a minus b, okay, and a plus b, that always gives you a square minus b square. Okay. That is the identity we are going to use in all the rationalization questions where we have a binomial in the denominator. Okay. So we'll continue with this identity, application of this identity. Hold on, I'll keep it there. Okay. Let's see it. Now, this is a, I'll show the comparison, a minus b. This is a plus b. That means we are going to use that identity. And that identity says a square. So we'll put square on root 41 minus b square. We'll put a square on 5. Okay. So let's see. I'll still keep the 16 here. Okay. Next, root 41 का स्क्वायर हमारे पास 41 होगा और 5 का स्क्वायर हमारे पास 25 होगा. ठीक है. जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर ऐसे रख रहे हैं अभी, जो डिनोमिनेटर है वो हमें 16 ही दे रहा है. माइनस करने पे 16 दे रहा है. दैट इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, कि हो सकता है कि डिनोमिनेटर में ही ऐसा नंबर आ जाए जो 16 को सिंप्लीफाई कर दे. कुछ नहीं होता तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं.
चलिए, तो ये 16 से हमारा 16 कैंसिल ही हो गया यहाँ पे तो। और हमें आंसर मिल गया √41 + 5। ठीक है, सो दैट्स द अनदर फॉर्मेट। ये और देखते हैं। अब इसके बाद एक वैरायटी है जिसमें कि ऊपर भी बाइनोमियल हो नीचे भी बाइनोमियल हो। एक ये रेंज देख लेते हैं। दैट इज, हम इस वीडियो में जितना डिस्कशन करेंगे उसमें आपका रेशनलाइजेशन का एक एक वैरायटी कवर हो जाएगा जो कि आपको बन सकता है ना। चलिए चेक करते हैं। तो फिर वही, न्यूमरेटर से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हम डिनोमिनेटर को देख के काम करेंगे। डिनोमिनेटर में माइनस साइन लगा हुआ है, बाइनोमियल है, हम भी वही टर्म्स लिखेंगे पर प्लस साइन के साथ लिखेंगे। तो ये 2 + √3 और ये 2 + √3 आपके पास हो गया। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं। इस बार फर्स्ट टाइम ये हुआ इस क्वेश्चन में कि दो बाइनोमियल आ गए, है ना। अभी तक ऐसा डेवलप नहीं हुआ था। ऊपर आप चेक करोगे तो 2 + √3, 2 + √3 मतलब सेम है। ये दैट मीन्स आई कैन राइट इट एज, भैया तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट खोल लो। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो चार टर्म्स बनेंगी, फिर रिड्यूस करना पड़ेगा। रैदर हम उसको आइडेंटिटी से कर लेंगे, तीन टर्म में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, नीचे एज डिस्कस्ड a - b a + b ही अप्लाई होने वाला है। दैट विल गिव यू a² - b²। ठीक है, अभी अपने को आइडेंटिटी ओपन करना रहेगा ऊपर भी और नीचे भी, है ना। ये आइडेंटिटी से हम लोग अवेयर हैं। ऊपर आप देखेंगे कि a + b का होल स्क्वायर अपन अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं उसके टर्म्स नोट करूंगा। सबसे पहले चलिए आपको क्लियर दिखाने के लिए एक बार आइडेंटिटी प्रॉपरली लिख देते हैं, फिर उसको ओपन कर देंगे। ये a² हो गया, फिर आ गया 2ab, और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, b का स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर की आइडेंटिटी हो गई 4, और ये आ गया 3। तो ये तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर हमारा हट गया। अब ऊपर देख लेते हैं। 4, 2 × 2 4, 4 × √3 इज 4√3, और आगे √3 का स्क्वायर हो गया अपना 3। तो ये जो 4 + 3 लाइक टर्म्स हैं ऐड होके 7 हो गया, और नीचे साथ में आगे कितना, 4√3। ये हमारा आंसर है ना। तो न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी लग गई, डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी लग गई, बाइनोमियल अपन बाइनोमियल का ये टाइप हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप चेक करते हैं फिर। नेक्स्ट वेराइटी देखिएगा। तो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, टर्म्स बढ़ती जा रही हैं, है ना। प्रेजेंटेशन बदल रहा है क्वेश्चन का। अगला अपन चेक करते हैं। इस वेराइटी के बाद कई बार देखिए नंबर इस फॉर्मेट में आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह का 4√3। ये सिर्फ देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो बड़े नंबर देखकर हमें कई बार बच्चों को लगता है कि यार ये तो अपन कैसे वर्कआउट करेंगे, इतना मल्टीप्लाई डिवीजन और स्क्वायर रूट। बट वो बहुत इजीली वर्कआउट हो जाता है। 4√3 + 5√2, और डिनोमिनेटर जो दिया है वो थोड़ा डिफरेंट वे में इंटरेस्टिंग दिया हुआ है। दैट इज 40, √48 एंड √18। √48 एंड √18। अभी √48 और √18 से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए अपने को, है ना। हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि हम √48 और √18 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। 48 और 18 के साथ आगे क्वेश्चन ले जाना थोड़े से बड़े नंबर्स में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर अपन पहले ही उसको छोटा कर देंगे तो आगे चैलेंज नहीं आएगा। ये देखिएगा, 24, 12, 6, 3 और 3। अब आप देख पा रहे हो कि आराम से अपने पास ये दो पेयर बन गए। यहाँ से एक 2 बार आएगा, यहाँ से एक 2 बार आएगा, यानी 4 4 × 3 अकेला बच गया, उसका पेयर नहीं बना तो वो √3 में रहेगा। ठीक है, तो 48 की जगह अपन लिखने वाले हैं, √48 की जगह अपन लोग लिखने वाले हैं 4√3। तो वो ऊपर वाला ही नंबर आ गया, देखो 4√3, है ना। तो उसको नोट करते हैं। तो ये कितना हुआ हमारे पास, 4√3 + 5√2। नीचे क्या बन चुका है, √48, 4√3 ही बन गया है। अब 18 को भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 18 आपको परफॉर्म करके दिखाऊं, तो ये 2 9 हो गया, 3 3 9 हो गया, और 3 1 3 हो गया। तो पेयर बन गया हमारे पास 3 का। 3√2 के तौर पे हमारा नंबर सिंप्लीफाई हो गया। ये हो गया अब आपके क्वेश्चन वही बाइनोमियल अपॉन बाइनोमियल में, है ना। तो वही वैरायटी चल रही है। अब इसको वर्कआउट कैसे करेंगे, नंबर्स डिफरेंट है क्योंकि ऊपर वाले केस में, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो नंबर्स ऊपर थे वही नंबर्स नीचे भी थे, सिर्फ साइन चेंज था, है ना। ये चेक करो। इसमें क्या होगा, 4√3 - 3√2, साइन चेंज करना था डिनोमिनेटर के हिसाब से, और 4√3 - 3√2।
2, ये हो गया। ठीक है, अब अपन न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर हम कोई आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं। एक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, वो एग्जीक्यूट की जा सकती है, पर उसी फॉर्मेट में आगे चलता है काम। वी कैन यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू। 4√3 को 4√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 4√3 को 3√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नंबर पार्ट विल गो विद द नंबर, एंड द इरेशनल पार्ट विल गो विद द इरेशनल पार्ट, है ना। आइए चेक करते हैं। 4√3 को जब मैं 4√3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 4 × 4 तो हो गया आपका 16, और √3 × √3 हो गया 3। 16 × 3 टोटल मिला के बन गया 48। ठीक है, नाउ माइनस साइन, मल्टीप्लीकेशन में ध्यान दीजिएगा, माइनस साइन हमेशा। 4 3 = 12, ओके, और √3 × √2 हो गया √6, तो हमें मिला 12√6। वो इरेशनल है, तो मतलब वो अनलाइक टर्म्स है, ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट, अब मैं 5√2 को 5√2 को हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है 1 on 1। पहले 4√3 से करेंगे, और फिर 3√2 से करेंगे। ठीक है, तो 5 4 = 20, और √2 × √3 √6, तो आई गॉट 20√6। ठीक है, डन। माइनस साइन अगेन। 5 3 = 15, एंड √2 × √2 इज 2। 15 2 = 30। ठीक है, दैट गिव्स अस 30। ओके, चलिए इसको होल्ड कर देते हैं अभी। नीचे हम चेक करते हैं भाई, हमारी फिक्स्ड आइडेंटिटी a² - b²। ओके, now, okay, like terms, 48 and -30, that gives us 80. Here, these are also like terms, क्योंकि ये अगर irrational part सेम है तो वो like terms कहलाते हैं। उन like terms को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 20 में से आप ये जब 12 हटाएंगे, 20 में से जब मैं 12 हटाऊंगा, तो मुझे 8 मिलेगा, वो भी प्लस का। तो मैंने ये 8√6 यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, नीचे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या बच रहा है। 4√3 का स्क्वायर अभी हम कर ही थे, 4 4 16, 16 3 = 48, उसी का रूट निकाला था हमने एक्चुअली। माइनस 9, 9 2s और 80, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2s = 80, तो ये 18 नीचे आ गया। अब लेट्स सी व्हाट इज रिमेनिंग विद अस। 18 + 8√6 डिवाइडेड बाय 48 में से आप 18 हटा लोगे, तो दैट विल गिव यू अ 30। ओके, हाँ, क्योंकि न्यूमरेटर में भी अपन कॉमन निकाल सकते हैं, वी शुड गो फॉर इट, है ना। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को ले जाने के लिए हम एक 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम 2 बाहर निकालेंगे, तो विल बी लेफ्ट विथ 9 प्लस 4√6 डिवाइडेड बाय 30। देन वी कैन सिंप्लीफाई दैट 30 विथ 2, दैट विल लीड टू द फाइनल आंसर। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, दैट फाइनल आंसर वुड बी 9 + 4√6/50। Okay, so that is how it goes. Go easy on the numbers. Check out very carefully that you need to multiply the rational part, irrational part, multiply them together again. Okay, do not miss out anything. Whenever you have a negative sign, please be very cautious, because that negative sign generates the problem in general. Okay, with most of us. चलिए, moving to the next variety. अब ये जो वेराइटी आपके पास आ रही है, बहुत ही स्पेशल वेराइटी है तो रेगुलर रेशनलाइजेशन ही, बट ये पैटर्न सबसे ज्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वेराइटी है ना। इसमें रेशनलाइजेशन के अलावा एक कंपैरिजन का स्टेप और एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एंड वी गेट फुल मार्क। ठीक है, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज इट, लेट्स सी दिस वन। 5 + 2√3, ओके, 5 + 2√3, 7 + 4√3। अब देखिए, यहां तक तो अभी नॉर्मल क्वेश्चन है, बाइनोमियल अपन बाइनोमियल, वी डिड दैट ऑलरेडी इन द प्रीवियस वेराइटी। नाउ द ट्विस्ट इज इक्वल टू a माइनस a - 6√3। ओके, ठीक है, सो दे आर ऑलरेडी गिविंग अस दैट दीज टू आर इक्वल, फाइंड a। हियर आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये मेरा क्वेश्चन है, a फाइंड करना है अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो उन्होंने आपको जो आरएचएस में दिया हुआ है, दैट इज द that is your answer actually, format of the answer which is going to come after rationalization.
ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर रेशनलाइज करने पे आएगा, हम उसे आरएचएस वाला जो फॉर्मेट दिया है उन्होंने, उससे मैच कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, है ना। तो जो भी हमें ये ए वाली पोजीशन पे वैल्यू दिख रही होगी, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। लेट्स सी। तो चलिए रेगुलर रेशनलाइजेशन पहले करते हैं एलएचएस का। तो वी आर टेकिंग एलएचएस एंड वी आर गोइंग फॉर इट्स रेशनलाइजेशन, 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3। तो मल्टीप्लाई करा अपन ने इसको 7 - 4√3 और 7 - 4√3 से, है ना। यू गाइस आर ओके विद दिस नाउ आई गेस। चलिए मूव ऑन करते हैं। वही न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 5 × 7 गिव मी 735। ओके। 5 × 4√3 gives us 20√3. 2√3 into 7 gives us 14√3. And 2 into 4 is 8. 8 into 3 is 24. Okay. In denominator, I'll use the identity that we were using already. A square, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये अपन ने यूज कर लिया। ठीक है। चलो न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। 35 में से अपन ने 24 हटाएंगे तो अपने को 11 मिलेगा, और माइनस का 6√3 मिलेगा। जरा ध्यान दीजिए, हमारे आरएचएस से मैच कर रहा है। तो वे गोइंग ओके, राइट। 7 square is 49 and 4 4 16, 16 is a 48, so we got a 1 in the denominator, that's good। ठीक है। 11 - 6√3 upon 1। Now we have to just compare our answer with the RHS. Answer with the RHS. So we have a -6√3. They have also given us a -6√3. Exact match. That means whatever we are left with is A. Here we are left with a 11. So what we would write is, on comparing, with RHS, we get A is equals to 11. And here we okay। तो बेसिक रेशनलाइजेशन करने के बाद जो भी आपको आरएचएस में दिया होगा, आप उससे क्या कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। पोजीशंस मैच करनी चाहिए, टर्म्स मैच करनी चाहिए, है ना। उस फॉर्मेट में क्वेश्चन आना चाहिए था जो एक्स्ट्रा टर्म्स साथ में कनेक्टेड है। जैसे 6√3 यहाँ पे था, तो हमारे आंसर में भी 6√3 आया। ओके। तो उसको मैच करना होता है। एक वेराइटी ये है जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है एग्जाम्स के दौरान। ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं। उसी में कई बार दो वेरिएबल भी आ सकते हैं, है ना। ओके। एक ये रेंज भी काफी जगह, काफी सारे पेपर्स में ये वाली रेंज देखने को मिली है। इफ यू आस्क मी कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी पड़ेगी और क्या होगा, तो बिल्कुल क्लियर सजेशन है। एनसीईआरटी की जो मेन टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत ही लिमिटेड और बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करने के लिए द बेस्ट रेफरेंस वुड बी द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके। गो फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, है ना। यू विल फाइंड ऑल दीज वेराइटीज टू प्रैक्टिस। ठीक है। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पार्ट। नाउ से दे से कि देयर इज सम a कॉल्ड 2 + √3। ठीक है। एंड दे आस्क यू टू फाइंड a plus 1/a। Okay. Now, a we already have. Why don't we find 1/a first and just add it with a? In order to find 1/a, I'll put the value of a. Now, this becomes our question of the very second or third type we talked about this, where we started with the binomial section. है ना? तो बस let's rationalize this. 2 - √3. 2 - √3. ठीक है। Let's see what we have. 2 - √3, नीचे a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। You got 2 - √3 and 4 - 3, which is 1. So we got 2 - √3. Here I have the value of 1/a ready. So let's find the value of this. What a plus 1/a I would be writing? In place of a, I'll take 2 + √3. This plus. In place of whole 1/a, some students get confused.
और ये जो आंसर 1/a का ही आया हुआ है हमारे पास, तो कई लोग क्या करते हैं, उसको हम्म। भी रेसिप्रोकल करके फिर से लिख देते हैं। तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस। आपके पास ऑलरेडी 1/a का फॉर्म फॉर्म में ही आंसर आपका रेडी है, 2 - √3, तो पुट इट एज सच, 2 - √3 ये रख दिया मैंने। √3 and √3 cancel out, and our answer is 4. Okay, so that's the another variety from rationalization, है ना? Let's check out further. Okay, we have one more range to talk about, है ना? Multiple rationalizations at the same time. Let's see. The last and the hots category variety, and you are now the master of rationalization after covering this section. Okay, let's see. Question says 7 √3 upon 7 √3 upon √10 plus √3. That's the first part. 2 √5 upon 6 and 5. 2 √5 upon 6 and 5. Second section. Now we have one more. 3 √2 upon 15. 3 √2. That's in minus actually. 3 √2 upon 15 plus 3 √2. So we have to simplify this whole term altogether. Okay. They have asked us to find the value. ठीक है, तो yes, we have to rationalize each and every one of them, है ना? You can do it together, you can do it separately, and then put on the answers here. I'll do it all together. Let's check. So 7 √3 upon √10 plus √3, that will give us √10 minus √3 upon √10 minus √3. Okay, that's the first section. I would suggest to put them in the bracket. Now we'll go with the second part. We have 2 √5 upon √6 plus √5. We'll multiply it by √6 minus √5 upon √6 minus √5. That's the second section. Let's separate it with the brackets. Now 3 √2 upon √15 plus 3 √2 to be multiplied by √15 minus 3 √2 and √15 minus 3 √2. तो अपन ने तीनों को क्या किया, हमने रेशनलाइज करने का जो पैटर्न हमारा होता है उसको अपन ने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, देर आर ओनली मल्टीपल रेशनलाइजेशंस अकरिंग टुगेदर, बट द प्रोसेस इज द बेसिक वन ओनली. देर इज नथिंग न्यू और सम न्यू कॉन्सेप्ट इज नॉट अराइव्ड ना. It's going in basic detailing. Now let's see what we have. Okay, I'll just work out the denominator. That's √10 square minus √3 square. Okay. Now in the numerator, we have to use a distributive property. 7 √3 into √10 will give you 7 √30. Okay. Minus 7 √3 into √3. √3 into √3 becomes 3, and 7 threes are 21. Okay. That's the first part. I'll again put a bracket over it. Next. Here, that gives us √6 square minus √5 square. Okay. Uh, and there, 2 √5 to be multiplied into the distributive property ways. 2 √5 into √6 will be 2 √30, and minus 2 √5 into √5 is 5. 5 twos are 10. Okay. Using brackets helps you to not get confused with your own negative signs, okay, where to put them, where to change them. That's a concern. Wherever you have a negative sign and you have multiple terms, put a bracket. Okay. Now, here, √15 square and 3 √2 square. Okay. In the numerator part, we have to multiply them distributive again. 3 √30 for the first one, and 3 √2 into 3 √2, right? So 9 twos are 18. Okay. Now we have to carefully change the sign, simplify the denominators. Have a look. Okay. Fine.
चलिए, I'm simplifying the numbers now. ठीक है. In the very first bracket, I'm getting a 7 common, and I'm taking that out because that 7 is going to help me out. Let's see. In the denominator, I'm getting 10 minus 7, 10 minus 3, sorry. So that again gives us 7. है ना? So we'll keep it. Obviously, it's going to simplify directly. Minus sign. I'm still putting a bracket because I haven't got the simplest term yet. Okay. In the denominator, we have got 6 minus 5, which is 1. Okay. And in the denominator, we got 2 root 30 minus 10. I'll keep it. I'll keep it right now. Minus again. Now, 3 root 30 and minus 18. Now, in the denominator, we got 15 minus, let's say 15 minus 9. 9 2s are 18. 15 minus 18 is minus 3. Minus 3. Okay, that means we need to take out common. We have to take out common in the last bracket. Rest 2 are done. Root 30 minus 3 minus 2 root 30 plus 10. ये मिस हो जाता है. Maximum students miss this. Negative into negative. है ना? So that needs to be taken care of. Minus 2 root 30 plus 10. Okay. Now let's see. That minus and this minus, we can convert them into plus altogether. We'll put a plus. Now what we have, if I take out common from the numerator, 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास. वो 3 डिनोमिनेटर के 3 को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास जो टर्म्स बचेंगे वो होंगे रूट 30 और माइनस का 6, क्योंकि हमने 3 कॉमन निकाल लिया. 3 6 आर 18, है ना? तो जो 3 हमने कॉमन निकाला था वो डिनोमिनेटर के 3 से सिंप्लीफाई हो गया एंड यू गॉट टू हैव रूट 30 फ्रॉम द फर्स्ट टर्म and 6 minus 6 from the second term. ठीक है. Why I didn't change the sign? Because I already they made that minus compared with this minus sign to make it a positive. Okay. So we have got the terms. Let's see what like terms we have. है ना? तो 10 minus 6 is 4. 4 minus 3 is 1. So that's a 1. Root 30 with this root 30 gives us 2 root 30. And we have a minus 2 root 30 that cancel out, and we are finally left with just a 1 as the final answer. Oh, a little 1. And so with a very big question like this, we got a very smallest answer, that is 1, just 1. Okay? That is how it goes. I don't think it's typical, but yes, it requires 3 rationalizations running up at the same time. Okay? You can solve them separately too. Okay? Okay, so that was another variety for rationalization, and we have covered up all the possible range of questions that could arise from rationalization by increasing our level up. Okay, just review all those questions carefully. If you have any concerns, any doubts, you can just post in the comment section. Okay, see you next video with another topic. Goodbye and take care.